ओके परफेक्ट नाम बाद में लिखूंगा, अभी मैंने कर लिया। ओके, ठीक या है। जस्ट इंट्रोड्यूस मानसी प्लीज। आई एम सॉरी, आप करिए अपने आप को, मैं नहीं थोड़ा नहीं कोई नाश्ता बात खाया था इसलिए। नहीं यस यस So yeah. So hi everyone. I am a creative connection coach and I'm also a brand smith. So I help people design their lives using design thinking methodologies. And that's coming from my background where I have been like a brand designer and I've worked on a lot of campaigns and big companies, MNCs like Sula Wines, Crisil, Director, and many other MNCs, and also with small entrepreneurs, SMEs. And so now currently I have connected my dots and I am also helping people, individuals to design their lives along with the brand designing that I love to do. So yeah, that's it. बस। So I would like to, it would be great if I can see a few of you on camera so we can just have some interaction. And yeah, Harish ji, how हाँ, would you want it to go? नहीं स्टार्ट कैमरा इट बेटर। मैं अभी थोड़ा नाश्ता करो इसलिए, बाकी सब लोग स्टार्ट करें कैमरा, एंड Yes. यू कैन टेल योर स्टोरी ना। पर मानसी, आई वुड लाइक यू टू प्रोवाइड, आपका ग्रुप का जो है ना, किसी को ज्वाइन करना है तो एक भेज Mhm. दीजिएगा हाँ इसमें हाँ अपने, after the session I'll send it over like okay. बिकॉज शी इज एक डूइंग मैसेज समथिंग वेरी है डिफरेंट। तो हाँ will it's a short drafted message where it's shared what books what do we do there and ओके। then currently और वो उसका लिंक मैं भेज दूंगी अच्छा तो I today I want to talk about instead of just sharing my story I will do share that but as Harish ji has introduced me like he has asked me to take up some topic for everyone like that will benefit everyone so I was thinking of taking up since Harish ji this platform this time I have seen that he is using it for um, encouraging people to share their stories right like you are the hero and that's his idea behind this meeting today like Sunday meetings at 8:30 so I would like to understand what do you so today what I would like to take you through understanding about how to own your story so many times what happens is हमें लगता है कि अरे हमारे हमारी स्टोरी इतनी क्या ठीक रहेगी या फिर किसी और की स्टोरी वी फील वेरी लाइक ग्रेट अबाउट बट खुद की स्टोरी जब बताने का टाइम आता है देन वी फील वी डोंट हैव एनीथिंग टू शेयर हमारे पास क्या है हमारे वी डोंट हैव एनीथिंग ग्रेट टू शेयर एंड थिंग्स लाइक दैट राइट तो इसके लिए या यस आर्य जी नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। so I would like you guys to understand and take you through the small like introduction about what is a story and how can you be sharing your own story in various ways. In fact, there could be stories in your everyday life too that you can share as your success stories. So, can we just make this a little interactive rather than me speaking alone? And then I'll come to my story also eventually. या दैट बी बेटर। Yeah, yeah. Anyone else wants to share something? What do you understand by being a story? Have you shared your story? Do you have a resistance to share your story so far? Anything? Just unmute and speak. Yeah, everyone has its own story. Huh? यस मंजीत। Yeah, Manjit? Yeah, so I'm saying like in our lives, everyone has its own story, but we don't we hesitate to share it or don't want to share it. So, Yeah. so as this forum is about that only to give a chance to speak up and share his or her story. Yeah. Yes, yes, very true. That is the problem, right? Like that is why we struggle sharing our stories. We feel shy about it और हमें डर लगता है कि अरे मैं क्या बोलूँ कैसे बोलूँ लोग क्या कहेंगे मेरा इंग्लिश ठीक होगा कि नहीं वी हैव अ लॉट ऑफ डिल्यूजन्स इन आवर माइंड राइट और इसकी वजह से हम खुद को रोकते हैं शेयरिंग करने के बगैर हम खुल के बोल नहीं पाते राइट तो सबसे आज ना बड़ा हम वो सबसे बड़ी और बात की क्या कहेंगे वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या यस कहेंगे लोग? यस वेरी ट्रू नहीं, सच बात है फॉर मी द थॉट प्रोसेस वाज मोर ऑफ कि भाई
आई मीन यू लुक एट अदर स्टोरीज एंड यू थिंक यार नहीं इतना तो अपना अच्छा नहीं है, और परहैप्स आई वुडंट बी एबल टू ऐड दैट काइंड ऑफ वैल्यू, सो यू ऑलवेज थिंक कि नहीं नहीं अपना तो इतना, वी डोंट हैव समथिंग ग्रेट देयर टू ऐड. हाँ, किसी किसी का स्टोरी हम सुनते हैं और हमको काफी सारा स्ट्रगल में से वो आए रहते हैं, एंड फिर हमको लगता है अरे मेरा तो फिर भी सब ठीक ही है, मैं क्या बोलूंगा, मेरा स्टोरी क्या ही है इनके सामने, राइट? हमें एग्जैक्टली ऐसे लगता एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी है। सिंपल वन नरेटिव. हाँ. या हाँ, वो होता है, इसलिए हमें लगता है कि अरे इसमें कुछ है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है मेरी स्टोरी में इतना, राइट? सो so I'll just share one structure with you guys, and just let me help you understand that. It's a वन small मिनट video. मनीषा, मनीषा 1 मिनट. ये जो है ना मितेश और राजेश वर्मा, इन्होंने दोनों शेयर किया था. मितेश इज अ स्पेशली एबल्ड पर्सन लाइक मी. Yeah, इज I've seen the videos. Yeah, अब देखा ना. और I've राजेश वर्मा, seen. बस बस, ओके ओके, थैंक They यू were थैंक excellent. They were very good. यू. I have हाँ, seen their videos. But I would like everyone, like since you have generously helping others, and you are actually you have created this platform, so I would like that everyone should come and share, so that कमेंट और वो शेयर. ऐसे ना सोचे कि हमारे स्टोरी में क्या है, like so that is why I have got this today, like कि हम थोड़ा सा brainstorm कर लेंगे और समझ लेंगे कि there is nothing big about it. In fact, when we share our stories, we feel liberated, we feel empowered. यस, So एब्सोल्युटली. the way, like I'll just share this one experience. So in one of the courses that I have done, and in fact even I do it in mine, so we were told to write our stories just like how we write a book. So it's a very very important and beautiful exercise. And in fact when we write our stories, like even if you don't do the writing part, but even if you process it, what happens is you live it again, you relive it, You and then relive you it. look at it from a different perspective, because now you are a evolved person, so you're looking it from a helicopter view kind of a thing. So that's a Oh, different thing about your whole life story. So you should anytime do that exercise just as an exercise also. And it's not always about telling our life story, it's about telling a small incident where we have succeeded also. That is also a story in itself. कभी कभी क्या लगता है, सबको लगता है कि यार स्टोरी बोला तो सबको लगता है कि आई हैव टू शेयर माई लाइफ जर्नी, एंड देन sometimes when it happens that we don't feel ourselves as successful enough, or when we feel कि I am not there yet, like किसी और के नजरिए से ज्यादा खुद के नजरिए से, या फिर शायद से वो बोरोड नजरिए से जो हमें किसी हमारे पेरेंट्स या जो आजू बाजू के कोई लोग हैं या कोई इंसिडेंसेस जो हुई रहती है, ट्रॉमास हुए रहते हैं हमारे साथ, हम उनके थ्रू जीते रहते हैं, और उसके लिए हमें लगता है कि यार नहीं नहीं मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है, हमारे पास क्या ही है, राइट? yeah, So yeah. that is why I'll just share something. So that is why the topic of today, I have named it as own your story. So it may मानसी, not 1 मिनट be है, your life story. खाली एक Yes, मिनट. yes, I will. मैंने देखा है कई बार है ना, एकदम छोटा काम लगता है, अपना लगता है ये क्या किया है, और वो किसी को इंस्पायर करता है, और किसी का Yes, बड़ा काम इंस्पायर नहीं कर पाता है. yes, आई डोंट नो व्हाई, yes. बट इट हैपनिंग. तो हर एक को अपनी Yes, स्टोरी I'll बोलनी tell you चाहिए. why. I'll tell you why. So, I have a perspective towards this. तो वो क्यों होता है पता है? क्योंकि जब कोई बड़े लाइक हम आजू बाजू हमारे हमेशा स्टोरीज देखते सुनते रहते, लाइक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, स्टार्स है, या जो भी स्टोरीज आर एवरीवेयर, राइट? देयर सो मेनी पीपल क्रिएटिंग देयर ओन स्टोरीज, एंड दे आर इंस्पायरिंग अस, बट समटाइम्स वी डोंट कनेक्ट विद देम बिकॉज वो बहुत ज्यादा दूर बहुत लगता दूर है, है बहुत हमें। बड़ा है. बट जब कोई हमारे नजदीक वाला हमें कोई किस्सा सुनाता है, या कोई फ्रेंड की कोई चीज बताते हैं कि अरे मैंने ना ऐसे किया वैसे किया, वी कनेक्टेड विद बेटर, बिकॉज उससे क्या होता है कि वो हमें लगता है अरे ये इसको हो सकता है तो मुझे भी हो सकता है, सो समथिंग दिस इज डूएबल. पॉसिबल फॉर मी. गुड, So यस. it looks more reachable, it looks Yeah, more रीचेबल. achievable, and it looks more real to us because we are going through something similar, or we are struggling to something similar. So what I would encourage that, because Harish ji has created this platform, I would encourage कि ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार बोल दिया हो गया. You keep coming again and again and use this opportunity, this platform as an opportunity to share your so there is this one thing that we do in life, designing, or normally even in coaching anyone, like how you write a gratitude journal. We also encourage people to write a victory log. So कोई भी चीज, like it's a simple activity, what you can do is every day, जैसे हम लोग ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, लाइक यू जस्ट राइट 5 ग्रैटिट्यूड, व्हाट सिंपल प्रैक्टिस, काफी लोग फॉलो करते हैं और जानते हैं इसके बारे में. सो देयर इज दिस प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग अ विक्ट्री लॉग.
जैसे रोज you can just write 3 things that you achieved today. That is a small victory, it's a small win, and that's good enough. So जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको चाय बनानी नहीं आती, बट आज आपने फैमिली के लिए चाय बना दी, दैट इज अ विक्ट्री, राइट? दैट इज अ विक्ट्री इन itself because you have never done it before. It's You a never done small it. victory, but it's a big thing. So write that in your victory log. So जब हम, it's basically training your mind and your muscle. So it's building your muscle of winning. So हम आपके माइंड को बता रहे कि आज मैंने ऐसे कुछ किया जिससे आई फेल्ट लाइक अ अचीवर, and I do not feel like a failure. We are focusing, we are training our mind to focus on the victory part of it. So वैसे ही just start writing a small victory log, just 3 things every day, 5 things eventually. Because क्या होता है ना, there are things happening in our life, there are things we are achieving and when we are doing, but we are not noticing it enough because we are always focused on what is not happening. That is one of the things most of the times. So there, from there you will have your own stories. So you'll know कि अरे ये मैंने किया, something that you just couldn't achieve last week but you could achieve this week is a win, is a victory in itself. So It's a win. that's good enough, something like that, anything. So I'll just share, like today we're talking about, I can share the screen na Harish ji? No, I think मैं you have to give me I'll permission. permit you. मैंने किया Yeah, है, एक सेकंड ना मुझे देना. I'll also open it for me. I'll make you co-host ना, या host बनाता आपको. नहीं नहीं, I'll just हाँ make you host. co-host, Host बनाओ. Okay. whatever. Okay. I made it. I done. अच्छा मानसी, बिफोर टू स्टार्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू रियली. आपने एक बार बोलने से आप आ गए. आई लाइक दैट. मतलब एक तो होता है ना आदमी को थोड़ा रहता है, नाना करता है फिर आता है. आप में वो नहीं था. नहीं नहीं, I यू was happy to be here. सो नाइस ऑफ यू. एक Just a गुण है minute, मतलब I'm मैं trying to, हाँ. एक मिनट, मेरा स्क्रीन मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली खुद को ही. Oh, I lost the Zoom Meet link. Okay. Okay, yeah. Okay, I'll try to share something, okay? If just let me know if that's visible to you. Yeah, now it's visible. Seekers. Okay, 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 okay. ये क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ, दिख रहा है ना अभी? ये से दिख रहा है दिख रहा है. So मेरा this वो is a बंद पड़ गया small, था. अरे यार कहाँ पे गया? Oh, I lost it again. Just give me a minute, huh? मेरा इंटरनेट बंद हो गया था. Yeah, is it good? Is it visible? यस यस एब्सोल्युटली. Okay. So this is how, like, these are the key elements. Okay. So as we keep this in mind, it's all about designing, it's all about creating our own story and actually being able to script it properly to share it with others. So these are the elements that help us, right? Just see. So हाँ हाँ. what is success basically? It's like an iceberg, right? It's what you see on the top, what people see on the top, यस. and जैसे आइसबर्ग ऊपर थोड़ा होता है, नीचे बहुत ज्यादा होता है, राइट? इट्स लाइक 3 times, almost 3 times or 4 times more than what it is visible. So what goes beneath is what people don't see. So what is that? It's your dedication, it's your hard work, it's your good habits, disappointment, sacrifice, failure, resistance, all the things that you have overcome through the journey. And then that people see what is visible to you. Was it what is visible to them? Or now I would like you to apply this not just for a life journey as such. You can do that, but also to small incidences. Like how that's the beauty of storytelling. So these are the things, and you can just craft your story around these things. And as we just do that and we frame something around it, we have a story ready to share. जैसे हम just make it easy for us, like जैसे हम दोस्तों से स्टोरी शेयर करते ना, अरे पता है क्या, ऐसे हुआ वैसे हुआ. It just similarly maybe you just have to, अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म पे बात करनी है और आप चाहते हैं कि थोड़ा और प्रोफेशनल तरीके से बोले, तो मे बी यू कैन क्यूरेट इट अ लिटिल डिफरेंटली, बट दैट्स द ओनली डिफरेंस. So you're just mentioning all the details and the journey in a interesting way. So now this is crucial. This is like, this can be your chart or our chart to share our journey. And as I said, you can relate it with your life, or you can relate it with some situations which you have overcome in your life, or something, some small, and that could be the story in itself, right? Like a chapter of your life, or like a small scene of your movie, right? So
So this is the journey, okay? So pehle kya, just like the iceberg, it's like a normal world and the world that is unknown to us, that we are not aware of, that people are not aware of. Basically, we are aware of because we have gone through it. And when we share this unknown part of our story up to others, that is where the inspiration and connection comes in. That is where people connect with us. That is where they, and that is how we start gaining respect also, and that is how we connect with people because they understand us better and they understand how that is possible even for them. That's how we inspire them by just sharing our stories. That's the motto and the purpose of Haresh's initiative, right? So just let me take you through that. So basically, it's like you start somewhere, like any incident, whatever, where you want to start. Like you decide what you want to talk about. You start there. Then what is the next one? It's मानसी like, शेयर योर दिस वीडियो आपने अच्छा बनाया yeah, है. yeah, yeah. हाँ हाँ. So थैंक यू. नहीं वीडियो नहीं है. These are just two slides. I'll share it with you. Okay. हाँ So हाँ वही वही yeah. ये अपन So you भेजेंगे ना, मजा start. लगाया मेरे को. Yeah, you start somewhere, then you start looking at that incident or situation as an adventure. And what is the thing about adventure? We are curious. We look at it from the curious point of view, right? And then you start meeting people, having influences or insights or whatever. You share your experiences in the journey. And then as we start, life is not linear, right? Life is up and down. Life is not like a linear road where it just like you start and you grow up and the graph just goes up. It's not like that. It's like a spiral, right? Like sometimes we go down, sometimes we come up. कभी कुछ होता है, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कभी कुछ चीजें हो जाती है लाइफ में, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, एवरीथिंग डजंट गो अकॉर्डिंग टू द प्लान. So that's what the beauty of it is, right? जैसे ECG ग्राफ भी आप देखेंगे, वो स्ट्रेट लाइन है, then it's dead. It has no value to it. And जब ups and downs है, that is why we know that we are living, we are experiencing, and people are connecting with us when they experience something that is similar to theirs. That is how they get inspired, and that is how we are able to connect with them, because we all go through that from some point or the other, in a different, maybe in a different situation or a different area of life. Some might struggle in relationships, some might struggle in finances, some might struggle in some other area, but that doesn't matter, right? The journey is all about winning through our situation. So as the chart goes, so the normal world has its a start and the end. So it's basically normal. Iceberg को connect करो इससे. So basically this iceberg, now you start just imagining this according to the iceberg, okay? So now you go crossing threshold. So you have something like something in your mind, and you just not, it's not working out for you. So you just share about ki what was not working for you, okay? And then after that, you think and what failures you encountered. People feel very vulnerable about sharing their own failures. तो हम जब अपने फेलियर शेयर करते तो हमें शर्म आती है, वी फील शेमफुल, वी फील अशेम्ड. बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जैसा कोई और भी उससे जा ही रहा है. तो अगर हम शेयर करेंगे, देन एक्चुअली व्हेन वी शेयर आवर फेलियर्स, आवर जर्नी एंड हाउ वी राइज थ्रू देम, that actually empowers other to share theirs. It liberates the other person to tell them कि कैसे वो भी शेयर कर सकते. Like it's okay. You give that kind of acceptance. You create that safe space for everyone, right? So then something happens in our life, then growth, new something new you're trying to do, but then it happens कि we reach a dead end, right? एक point आ जाता है किसी भी situation में. If you see, there is this one point, हनुमान जी को भी तो आया था, like when he was looking for Sita. So there is this point where we feel depressed, we feel Yeah. oh, there is no hope, I am just hitting the rock bottom of my life, right? And that और is where जामन को it बोलना पड़ा, becomes like a राइट. turning point. And हाँ there is मानसी, this. और Yes. जामन को बोलना पड़ा उनको ना, कुछ ऐसा कुछ था ना. हाँ, कोई मुझे लाइक इतना दैट. नहीं, बट हाँ किसी ने उन्हें कुछ हाँ कुछ जामन ने उसको बोला राम ऐसा जी कोई का है उनको कि याद. यू कैन फ्लाई. यस. सर ये और रिकॉर्डिंग करिए ना, राम शायद जी का रिकॉर्डिंग उनको स्टार्ट कुछ नहीं याद किया आ. है. रिकॉर्डिंग चालू है, चालू है चालू है रिकॉर्डिंग. ना? हाँ. ओके फाइन. और फिर क्या होता है, फिर वी फील कि अरे अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता. वी डू फील दैट, राइट? इन एवरी जर्नी वी गो थ्रू दीज स्टेजेस, बट मे बी दे आर वेरी मेनी टाइम दे आर अननोटिस्ड. और मे बी वी फील कि हम उसमें से एक ही पार्ट ध्यान में रखते हैं.
तो हमें लगता है कि हम वहीं पे स्टक है, बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ प्रोसेस. तो वहां से फिर देन वी राइज अप राइट फ्रॉम दैट सिचुएशन. एक पॉइंट के बाद वी राइज अप, देन देयर इज अ रिविलेशन, then there are some changes that we make, then we do something about it, then there is attunement, then we get aligned with things, then things start falling in place for us. then कुछ चीजें होने लगती है, कुछ लोग आ जाते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, कुछ ना कुछ होता है, right? And then we again return, and when we are again like back to the normal world. And it's like just drafting your story around this, where you actually take people more about the experiences and the struggles and how you went through them, and then about the glorification of it, which is the normal world, which is the visible part of the normal world. So अगर आप ऐसे इस तरह से अगर आप हर एक पॉइंट को लेके भी आपका स्टोरी ड्राफ्ट करो, लाइक, तो इट विल बी गुड इनफ फॉर यू टू शेयर योर ओन स्टोरी. ठीक है. So I would want everyone to just take a minute. As you can see the screen now, can you just think of one incident in your life that you want to... Harishji, can I share this with you and you can share it on screen so that I can come on camera back? Oh yeah, Otherwise, I can do it. Yes, yes. yeah, yeah. Okay. I'll just, because I'm not able to hand, I'm on my phone. It's becoming difficult for me to. I'll just share the picture with you. So right now, I just want everyone to. Can you take a pen and paper and you just write down one incident where you have been through, like जो आपने आप स्ट्रगल में से जा रहे थे बट आपने वो ओवरकम कर लिया, एंड यू कैन शेयर इट विद अदर्स. कुछ भी छोटा सा, आप कोई सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, आप कुछ नया सीख रहे हैं, आप कुछ नया हॉबी डेवलप कर रहे हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, या पहले स्ट्रगल कर रहे थे बट नाउ यू हैव ओवरकम इट. क्या होता है ना लाइफ में, व्हाट हैपेंस मेनी अ टाइम्स, वी आर स्टक इन अ लूप and we are not able to overcome or go out of that loop, and that is because we are not thinking through it, we are not taking the learning out of it that we are supposed to. So own is basically, if we just try to um, see it this way, like own is what, like OWN, it's original, wisdom, and nurturing, right? So I'm just saying it, like trying to bring more meaning out of it. So Original originality, wisdom nurturing. it's originality. So it's where you own it, like you, when you own something, because it's your original thing. So that is, we're talking about owning our stories, right? So it's like your original thing, so you own it, because something is wrong. I don't know why I'm not on camera. Did you send? You're owning it basically, so you're trying to it's something that is original. Your story is very original, that cannot be anyone else's story, right? It is only yours, only you have gone through that experience, so it's very original thing, it's a very private thing. So that is the beauty of it, and that is why you should be sharing it to the world, because if you don't, nobody will, nobody can. So that is owning it. See, O is originality, it has an originality to it. There's a wisdom to it, because now that you have decided to share this, or maybe you're even introspecting about it, so it's a wisdom in operation that is working for you, right? There is this wiseness about you that has helped you understand it, ki there is some power to this, that something is worth it, right? You can also call W for worth it, and N is for maybe the Okay. nurturing part of it, right? So जैसे हम बोलते हैं ना, नर्चर करो, नरिश करो. जब हम किसी पौधे से, फूल से प्यार करते हैं, we don't break it, we want to put water to it, we want to make the soil fertile for it, we want to nurture it. So it's like nurturing, creating the right atmosphere to it. So just, maybe I'm just giving you some key points, maybe we can just draft you can draft your stories around it. And I've just thought of something for like story. So what is the story basically? So that's what, how I feel it is. The story is basically a script transcending arbitrary, STO, right? A script transcending arbitrary, rewiring you. So
it's like just I'll just take you through one word of it and help you understand what do I mean by it. So script transcending arbitrary rewiring you. So आप कभी कोई स्टोरी सुनते हैं, जब हम बच्चों को कोई स्टोरी सुनाते हैं या वॉट एवर इट इज, सो क्या होता है, देर इज सम इंसाइट, देर इज सम नॉलेज, देर इज सम मॉरल ऑफ द स्टोरी, राइट? ऑलवेज लाइक मैं जब मेरी बेटी को स्टोरी सुनाती हूँ तो आई हैव ऑलवेज प्रैक्टिस्ड इट कि मैं उसको स्टोरी बताती हूँ और मॉरल वो मुझे बताती है, लाइक शी टेल्स मी द मॉरल, एंड दैट इज हाउ she has developed that ability to understand the meaning, like she derives some meaning out of it, and that is how she has learned her values well now. तो वो ज्यादा इनग्रेन्ड हो जाते हैं, राइट? एंड दैट इज हाउ, जैसे हरि जी ने कहा, वो इंस्पायरिंग और कनेक्टिंग क्यों बनती है, बिकॉज देर इज दिस फैक्टर, देर इज ऑल दिस फैक्टर्स दैट कि वो लोग रिलेट करते हैं उससे, दैट इज हाउ दे कनेक्ट विथ इट. सो व्हाट इज द स्टोरी? इट्स बेसिकली अ स्क्रिप्ट ट्रांसेंडिंग, व्हाट वाज ओ फॉर, कोई बताएगा? आर यू लिसनिंग? Arbitrary. Yes, script transcending arbitrary, ऑर्बिटरी में म्यूट पे था, rewiring ऑर्बिटरी. you, okay, or yourself. Or this is Rewiring. just something I R have come for up with. So rewiring. आप अपना भी, sorry. R for rewiring. रिवायरिंग. Yes, R for rewiring. So story script. तो अभी अभी script के बारे में बात करते हैं. So as we spoke in the beginning, script is what? हम सब एक script जी रहे रहते हैं. So in transactional analysis, or there are higher level psychological, anybody from psychological background, they will understand it better. So we all are living by a script. We all are living. We are living in patterns. We are living in some things that we are actually, आप अगर जाके हमारी खुद की लाइफ स्टोरी है जब हम लिखते हैं या सोचते हैं उसके बारे में, देर आर सर्टन थिंग्स कि वो रिपीट होते रहती है. जैसे कोई लोग आएंगे हमें फंसा के चले जाएंगे, और हर हर कोई लाइक एवरी वन इज टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, या कुछ भी चीज है, लाइक स्मॉल स्मॉल इंसिडेंट्स, यू फील दैट दे आर रिपीटेटिव, यू एज यू रिफ्लेक्ट बैक यूल सी, अरे ये तो हमेशा मेरे साथ होता है, बिकॉज वी आर लिविंग बाय दैट स्क्रिप्ट इन आवर माइंड्स. So we are living, and that is why we are always creating the same experiences for us again and again, because we are living by some script. So it's important that we change our scripts. As we change our scripts, we get better experiences, and we get new experiences to experience. That is how we get out of that loop that we are experiencing. अगर जॉब में वही एक्सपीरियंसेस आ रहे कि मुझे बहुत डिमांडिंग बॉस मिल रहा है, या मुझे जो वॉट एवर एक्सपीरियंसेस यू आर गेटिंग, या कलीग्स ही अच्छे नहीं है, जो भी है वो रिपीट होते रहते हैं. अगर हम जॉब भी शिफ्ट कर ले, वापस वही सिचुएशन हो जाती है, लाइफ में हो जाती है, रिलेशनशिप्स में, काफी चीजों में वी फील दैट एक्सपीरियंस, राइट? बिकॉज वी आर लिविंग बाय दैट स्क्रिप्ट, एंड वी नीड टू अल्टर दैट स्क्रिप्ट by changing certain things. So that is the part of the script, that is our story. So overall story का बोल रहे हैं ना. Then transcending this, like when किसी ने वो मिशन मंगल मूवी देखा है, या फिर यस. एनी मूवी, साईफाई मूवीज या कुछ, तो वहां पे आई कैन रिमेम्बर ऑफ दैट एग्जांपल राइट नाउ, कि वहां पे वो देख, दे आर लाइक वर्किंग ऑन दैट, हाउ द मंगल ग्रह विल चेंज हिज ऑर्बिट. तो वो एक ही इसमें लूप में घूम रहा है, एंड देयर इज दिस वन पॉइंट वेयर ही इट वांट्स टू चेंज द ऑर्बिट, एंड दे आर वर्किंग अराउंड इट. So basically, even when satellites and these things, whatever, like basically you have to shift. There has to a shift that has to happen in our life, and that does happen when we are sharing about some past stories. So we have a shift that gets created, and something happen, कोई कुछ बोल देता है, वो एकदम चुपता है, and then we decide कि नहीं, अब तो मुझे करके दिखाना है, या फिर कुछ हो जाता है, हम किसी और का कुछ देखते हैं, खुद का कुछ हो जाता है, where we get through a downfall or something, and then that becomes like a turning point in our life. So that's a shift. So that happens, right? Look, wo shift is an important thing, if we just highlight that. So that is the transcending part, where we shift from that orbit, from one orbit to the next orbit, to a higher level. We shift from a higher to one level to a higher level. What is sorry, transcending arbitrary हो गया. Rewire का तो पूरा series we have seen on B Club also, and many people from Feld जो and डिस्पेंसा. other these things are aware. There is this Joe Dispenza's beautiful series on by the name Rewire itself. रिवायरिंग. So in that he says that how we, as we grow, as we evolve, and as we give ourselves that space and work on certain things, we shift from higher to higher dimensions, and that's how we attract better things, and things change for us, right?
So उसमें rewire is basically rewiring of our brains, like जैसे हमने starting में बोला, rebuilding of the muscles kind of a thing. So story, script, transcending arbitrary, rewiring you. तो जिससे it's like a new you now. So उसकी वजह से क्या हुआ, something shifted about you, around you, something happened, that is why you are a new you. So basically a story is just a framework between a old you and a new you, between any experience. तो कोई भी लाइफ का इंसिडेंट, एक्सपीरियंस, एरिया जहां पे आप पहले से बेटर हो, पहले से बेहतर हो. It could be as simple as ki how I wanted to exercise but I couldn't exercise, but I did this one day, and it like for example, it could be like, but I just made sure that I just shopped for my this thing, or someone just taunted me, or something happened in my life, and then I just decided this one thing, and how I started exercising, and now I'm successful at it. As अच्छा, simple as that. Okay. So now I just want you to draft, write some incidences from your life that you think are your success stories. So एक हाथ भी जो भी आपको लगता है जो ठीक है. And I feel I am assuming. हाँ, yes Manji ji. You said about script transcending arbitrary rewiring. What is the last one? Why? You Okay, you. reviving you. or rebuilding you. You can say rebuilding you. Whatever, like you can add your own words to it. It just, this is Yes, my yes. this thing. I would Yeah, highly got it. recommend, please go and share. In fact, today in the group you can share like your own definitions of own and story, and then craft And your what is story this around it. That arbitrary? can be a formula. What is Sorry. this arbitrary? Orbit, Arbitrary means जो लूप हम एक जैसे Okay. धरती, घूमते हैं. moon revolves around earth in an orbit, right? Or there is Hmm. this loop that goes on. हम Okay. हम इस You loop you में gave रहते हैं an ना, like example of everything goes Mangal on in a Grah. loop. That's an orbit. We are revolving Hmm. around something. कभी कभी Right. हमारा Right. focus, when we are victimizing ourselves, our focus is all around our problems. So we are just focusing on like maybe वो एक इंसान जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. वी आर जस्ट ऑर्बिटिंग अराउंड दैट वन थिंग, वन सिचुएशन. वी जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट इट अगेन, या वॉट एवर टू लूप वी पुट आर इट टू एक्सपीरियंसिंग. पुट इट डिफरेंटली, मतलब शायद उनको इजीली समझ में आया, ये जो आपका फोकस उस टाइम पे था, आप एक चीज पे फोकस कर रहे थे, शायद वो वर्क नहीं कर रही थी, इट वाज द रॉन्ग थिंग टू फोकस ऑन, एंड देन हाउ यू डिस्कवर्ड कि ये नहीं, मेरे लिए ये फोकस होना चाहिए. Okay. Okay. Fine. Thank you so much. ग्रेट. ओके, तो अभी कोई चाहेगा क्या, कोई स्टोरी कुछ इसके अराउंड, एंड वी कैन हेल्प ईच अदर लाइक Yes. टू मेक इट बेटर. Would anyone want to volunteer to share the story around this structure, or whatever structure you feel right? Basically it has to have this 3-4 elements, like पहले आपने शुरुआत कहाँ से की, पहले का स्ट्रगल, पहले कैसे चल रहा था, बाद में क्या स्ट्रगल हुआ उसके बारे में, then how you went down, sharing your vulnerability about it, because it's always a graph, right? Like ऐसे नहीं है कि ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाता है. And if you're sharing that, अगर आप ऐसे ही बोलोगे कि मैंने इसे स्टार्ट किया और जैसे मुझे सक्सेस मिलती गया, there will be no interesting thing about it. So it has to have that ups and downs, because we go through it. It's always about only accepting it. Are we accepting it, or are we only glorifying the upper part? अगर जैसे हमने जो डायग्राम में देखा ना, ऊपर का और नीचे का पार्ट, that it's very important that the, if you see, the lower part, the unknown part, or the iceberg part has more taken more space than the upper part, right? So you have to Yes. talk about it more also. So when you talk about it more, when you share more about that part, that's where people understand you. That's when people connect with you. कभी मानसी, बहुत बार क्या हो जाता है, हम वो पार्ट ही स्किप कर देते हैं. एंड दैट इज व्हाई yes. आवर स्टोरीज आर नॉट कनेक्टिंग इनफ, बिकॉज लोग रिलेट नहीं कर पाते. नहीं कर लोगों को पाते. लगता है कि क्या, हाँ ठीक है, गुड फॉर यू, राइट? बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग एल्स. So anyone wants to just volunteer sharing their story or Yeah, I will anything do. that, मानसी, वन थिंग yeah, है, आज है ना हमारा चालू था ग्रेटिट्यूड पे. मैं आई एम डूइंग वर्कशॉप ऑन सेल्फ लव. उसमें हाउ टू बी uh-huh, ग्रेटफुल टू अवर सेल्फ. तो उसमें एक मस्त, मालूम नहीं कहाँ से आया दिमाग में, मतलब एक सीड है, हम सीड डालते हैं तो अंदर uh-huh, रहता है ग्राउंड में, वहां डार्क है, पूरा डार्कनेस है, कुछ दिखता नहीं है, बट उसका uh-huh. स्ट्रगल किसी वजह से नहीं, द सीड इज स्ट्रगलिंग एंड इट कम्स आउट. तो ये Yes, हमारा स्टोरी yes, वैसे ही है, वी yeah. आर लाइक सीड एंड नोबडी कैन सी अवर स्ट्रगल. हम देखते हैं सचिन ने कितना बड़ा आदमी, लकी लकी नहीं है, उसने इतना स्ट्रगल किया है.
So that is very वेरी nicely ट्रू, said. वेरी वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। इनफैक्ट आप अगर हम नेचर में भी देखें तो इट्स ऑलवेज लाइक दैट, दिस इज हाउ इट इज। लाइक जैसे आइसबर्ग है, वही ट्री का भी है ना। लाइक ट्री का जितना पार्ट ऊपर है, उसके कई ज्यादा पार्ट उसका नीचे, उसके रूट्स दे आर ग्रोइंग मच डीपर। द मोर डीपर द रूट्स, द टॉलर द ट्री ग्रोज। For the tree, सो yes. एज दे से, द मोर मोर बिगर योर स्टॉर्म्स, लाइक जैसे ना हमारे जितने स्ट्रगल्स बढ़े, जितने, इसके लिए ऐसे नहीं कि वी लिव इन आवर स्ट्रगल्स एंड विक्टिमाइजेशन, बट इट्स एक्चुअली तो दैट एक वे, आदमी राइट? ग्रो वी होता है ओनली ना, सी द सक्सेस। every with यस, every struggle you grow. If you want to grow, यस, if you don't want to grow, that's a different thing. then मितेश आपने हैंड रेज किया था बीच में. यस, मितेश जी इज ट्राइंग टू शेयर हिज स्टोरी टुडे, या प्लीज डू। इनफैक्ट अभी तो मैं चाहूंगी Thank कि you. एटलीस्ट लाइक देयर आर 8 of us टुडे, सो 8 8 वीक का तो एटलीस्ट आई थिंक वी आर कवर्ड, राइट? 8 लोग अगर 8 वीक में एक एक स्टोरी, एक इंसिडेंट भी बोलेंगे, एक एक स्टोरी, देन यस. और उनको देख के बाकी लोग इंस्पायर होके अपनी अपनी स्टोरी जरूर बोलेंगे, राइट? लाइक एंड वी हैव टू क्रिएट दैट स्पेस, राइट? वो स्पेस क्रिएट होना जरूरी है। जब सब बोलने लगेंगे तब जाके द वंस हु आर वेरी शाय विल वांट टू शेयर, राइट? True, very true. So there has to be someone who takes the lead for it. आज Yeah. मैडम राजेश्वरी कोई Manjeet है, ji. वो भी उन्होंने भी किया है ट्रांसफॉर्मेशन कोच. आई वुड लाइक Yes, टू हियर ऑल्सो समडे. Rajeshwari can relate with all many things that I'm sharing, because yeah, she अच्छा, does आपकी the दोस्त same. थी क्या? शी इज अ Yeah, फ्रेंड. we were हाँ हाँ. together na, in ओके Fred and ओके. all. मैंने उनको पहली बार देखा, इसलिए बोला. गुड गुड. तो उनको भी बनाइए ग्रुप में मेंबर. And Mansi ji, has and you said na this about the और ना, nature trees. और एक बात, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द लैंग्वेज। आप जिस ही यस. लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उसमें बोलो, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एक्सप्रेस करना जरूरी है, उसके बाद में ट्रांसलेशन तो हो जाएगा। अगर अगर आपको किसी लैंग्वेज में बोलने की जरूरत है कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे, तब वो हो सकता है, बट फर्स्ट ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ फुल्ली, ट्राइंग टू गेट टू द निटी ग्रिटीज। लाइक जैसे छोटे मोटे जो चीजें हमने बात की, स्ट्रगल्स, वल्नरेबिलिटी, वो सब बोलने की कोशिश करो। एंड मानसी एज वंस वी वी की पॉइंट्स ना, स्टोरी तो अपने आप बन जाएगी। बन जाएगी. मानसी वंस वी वेंट टू, मतलब हम लोग गए थे हांगकांग इधर. तो मैं कुछ बोलने ट्राई कर रहा था किसी को. थैंक यू राजेश्वरी. तो मैं बता रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था. तो मेरे वाइफ ने क्या किया, उसने टूटी फूटी इंग्लिश बोली एंड ही अंडरस्टूड. यस, एक्चुअली ना हमको लगता है कि वर्ड्स, बट वर्ड्स आर ओनली 7% of the whole यस. communication. It's your emotions, it's your body इमोशंस, language, बॉडी and so लैंग्वेज, many other things that are communicating any which ways. टोन. So हो जाता है, like we feel words are very important, but yes, words are important क्योंकि वो they are like the doorways, right, of our expression, like they are the ones. So yeah, Manjit ji, we are waiting for you to share. Yeah. So actually, Feel I was free. trying to share the example you shared. जो आपने पेड़ों की एग्जांपल ली, तो उसमें लाइक जितना मजबूत जो है वो रूट सिस्टम होएगा, उतना ज्यादा मजबूत जो है वो आंधियों को, या मतलब दैट प्लांट कैन ग्रो एंड बी सो स्ट्रांग. सो Yes, दैट एग्जांपल ऑफ आइसबर्ग एंड दिस रूट सिस्टम, दे आर सो इंटरकनेक्टेड दैट जितना वो ज्यादा मजबूत होएगा उतना ज्यादा जो है वो जितनी भी ज्यादा तेज आंधी या तूफान वगैरह आता है तो ही कैन सर्वाइव देयर. yes, वही very बताना true. चाह रहा जब जब हम like whenever you want anyone, if they want to draft their story, like want to prepare for the story, like just idea कि what we can also do, we can just draw a tree and we can just draw वो जो भी हमारे roots है, वो एक एक branches can be our points, like what was my conditioning, what was whatever, like जो भी हम बोल रहे हैं ना, ऊपर का और नीचे का part. So we can take them as our roots, the iceberg वाला नीचे का part या tree वाला, we can just take and we can just have that mind map in front of us as key takeaways, and we can definitely share. And the stem can be the journey, like how we evolve through it, and then fruits are whatever, like whatever results we got out of it. That can also be one way of expressing our story. So whatever works for us. Yeah, Manjit ji, we are waiting for you. या. सो आई वाज ट्राइंग टू मैं एक स्टोरीज बताना चाह रहा था अपनी, लाइक बाइंग ए कार. यू नो हाउ आई यू नो दैट जर्नी की मैंने जो कार बाय की कैसे करी, राइट.
and Harish sir really helped me in that. I was a, we at that time we were studying that the secret book. Okay, so like it started with that my wife's desire that she wanted that car, right? So मैंने उसके बारे में जो 4-5 चीजें होती हैं कि आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि क्या 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 उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है. लाइक फर्स्ट इज बजट, which kind of car you wanted, petrol, diesel, or CNG, right? And you wanted to have automatic or this manual car. Okay, then you wanted a 7-seater or 5-seater. Then what kind, means which make you wanted, like you wanted Tata, you want to go with Tata, you want to go with Maruti, or this Kia. There are many brands there, right? So main and most importantly the budget, right? Because when we go there and you start exploring those cars, uh, they will advise you, and your budget is, for example, 10 lakhs, and you end up buying a car with 15 lakhs, right, or 18 lakhs. So that was, I did my homework. I wrote it on the notebook, and it my uh, and I had a discussion with Harish sir, and he said me to write each and every specification, like even the color of the car you wanted to buy, right? हाँ, and wow. and yeah, and so जैसे मेरे preference था, like I wanted to have a car with automatic car, right? Because I was, while I was traveling daily to my office, तो जो एक जिसके साथ मैं जाता था, he has that car, and उसका जो मतलब this जो ऑटोमेटिक कार के जो फायदे हैं, तो बट मेरा क्या था कि लाइक आई वांटेड कि सीएनजी विद ऑटोमेटिक, you know but that time CNG with automatic, no company has that option for me. Then I drilled down, and I did a this analysis कि petrol versus CNG. Okay, तो फिर मुझे ये मेरे एक फ्रेंड है, उसके साथ मैंने डिस्कस किया. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉस्ट, what cost a CNG will have if I am buying it, what recurring cost it will have. One is the cost, buying cost. Okay. Uh, Second cost is the recurring cost, means Recurring running maintenance. cost and maintenance cost, right? Then I drilled down that, had a discussion with my friend, and finally that time, as I said, this CNG and automatic combination was not there. But yes, after few days, I came to know that Hyundai has come up with, no, sorry, Tata has come with that option also. But what I decided is I will go with petrol, and my budget is within 10 lakhs. So that discussion, because मेरे साथ ऐसा हो गया था कि I have to my मतलब that has become a necessity for me, because we are a family of 4, and daily मतलब अगर आप उबर या मीन वी हैव टू गो, मीन्स अगर आप उससे भी जाओगे, उबर या ओला से जाते हो, तो इट विल कॉस्ट यू मनी, राइट? So just so finally what we decided is, we what I decided is, with Tata makeup, and petrol and color, I means my wife told me. So finally, that that final product we bought. you know so just wanted to share that how this story means of this car purchase. So just wanted to share with you all. Thank you so much. Wow. Thank you. So, Thank you. so, so you tried your best. Like I loved how he had tried to incorporate all the pointers Everything. that we said.
Did you so how was your wife's and family's experience? What was their experience when you finally got the car home, like Yeah, brought it the was car home? amazing. Like actually, मतलब ऐसा था कि मैं सुबह उठता था तो मतलब माय वाइफ यूज्ड टू उसे ये बहुत था कि भाई मुझे हमें कार लेनी ही लेनी है। बट नहीं है। मेरा क्या था, अभी आई हैव अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, ऑफिस का देखना है ये, बट शी हैज कि भाई अच्छा, मतलब शी हैज दैट क्रेजीनेस की लाइक वी शुड हैव कार एंड वी शुड बाय इट एज सुन एज पॉसिबल, यू नो सो वो चीज। बट या मतलब जो जैसे ये मैनिफेस्टेशन वाली बात, या आई रोट इवन ऑन माई माई नोटबुक दैट आई हैव दिस कार, this color car, petrol car, we are driving, and we have got it. So like those things which we discussed, so finally that means it helped me when I wrote that things now on my notebook. That really helped me. मतलब मैं ये पहले से भी कर रहा हूँ कि कोई भी चीज जैसे मुझे करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे घर का कुछ लेना है, तो आई राइट ऑन ए नोटबुक कि हाँ ठीक है, मुझे ये like I wanted this thing. So that really helped us. So I wanted to say that thing कि अगर आपको कुछ भी Yeah. करना है, या जैसे आपने ये ऑर्बिट वाली बात बताई कि दैट टर्निंग पॉइंट, राइट? So that turning point, yeah, we keep on we keep on trying, और हम जब नजदीक पहुंचने वाले होते हैं, then we हम लोग उसको छोड़ देते हैं, we quit. But Ah, if we yeah. keep on trying that, so that point, that thin line is very important. So we must keep and we must take into those things consideration, consider our efforts, and जो भी बाकी है चीजें, वो हमें देखते रहना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा जो दैट फोकस एंड this turning point that we need to recognize. Welcome to MP Music World. Bluetooth Superb, mode. superb. Connected. कुछ ये आवाज क्या हो आ रहा रहा है? मुझे भी नहीं पता, शायद AI इज टेकिंग समथिंग और टॉकिंग। है? ये चलो किसने किया? आई डोंट नो। So okay, so this is awesome, but you shared it very well. Like and now अभी आपको ही लगा ना, like you already drafted a story around and as a success story of yours, right? और आपने अच्छी तरह से cover किया कि what was a vulnerable point, कि आपने Exactly. research, आपके life में mentor आए, हरीश जी आए, then you just wrote about how he helped you, क्या क्या काम किया आपने नीचे, जब अभी अभी आपको नहीं लगता, like I would ask others, is this inspiring enough? Is this like, if you want to buy a car or something, or any dream that you feel is out of your reach right now, will this story shared by Manjit help you? Like he just shared ki aap likho, and it does it also expresses a love for his wife that made him go this far, कि यस। इतना करने के लिए, अदरवाइज कोई बोलते नहीं अभी नहीं पॉसिबल है, या जो भी करके, इट कुड हैव बीन द सेम लूप, राइट? वाइफ चाहती है मैं नहीं ले सकता, वाइफ चाहती है मैं नहीं ले सकता, अब बस चलते रह रहा है, चलते रहे, but he made that happen. So that was a great And share. Mansi, it took me, around 1.5 years to, to do that. Yes. So because, And what like, I would say, मैं क्या बोलूंगी पता है, आप ये स्टोरी को और भी अच्छे से कैसे डेवलप कर सकते हो पता है, व्हेन यू वुड स्टार्ट, यू वुड आल्सो ऐड योर इमोशंस एंड योर uh, टाइम, जैसे हमने वो देखा ना नीचे, कि वो व्हाट वाज दैट पॉइंट वेयर यू फील डिसअपॉइंटेड, या जो भी, आप थोड़ा और डिटेल्स में जाओगे ना, लाइक अभी आपने बस 2 मिनट में शेयर कर दिया, नाउ यू, इफ यू हैव टू स्ट्रेच इट फॉर लाइक 20 minutes से, or like yeah, 15 minutes, how would you make it even more impactful? Then you would want to share more details, add more emotions. While you speak, you'll have to build upon your tonality, bring about the emotion out. That's how yeah, the speakers create, right? That's how yeah, they perfectly. curate it, right? So yeah, but Yeah, you already one have more the drafted. point would like to add here. Actually, अभी मैं ना एस राइड यूज करता हूँ. आई ट्रेवल टू माय ऑफिस. आई वाज ट्रेवलिंग एंड और मैंने जब कार ली, उसके बाद मैं ऑफिस से आता था, तो मैंने एस राइड पे अपना वो डाला. तो आई यूज टू कम विद जैसे मुझे कोई शाम को मैं आता है, तो ही यूज टू कारपूल विद मी. तो मेरे साथ एक और फ्रेंड है, मतलब ही यूज टू कम विद मी. तो उन्होंने ही वाज सेइंग कि मुझे भी कार लेना है. एंड
I told him कि आप मतलब वही सेम चीज जो मैंने किया था, तो and I asked him to do that, and he did that, you know. And yesterday I went to my office, तो मेरी मेरी जो colleague है एक और, she said that मैं परसों कानपुर कर रही थी, तो एक बंदे थे, उनके साथ में आई, तो he was saying कि आपका नाम ले रहे थे कि he you know he know you, and I went with her, तो तो मैंने उनको बताया कि I helped him to buy that car, to decide that car, and that feeling was really amazing because it took me that much time, you know and उन्होंने वो decide किया बहुत easy जल्दी, because दो थिंग्स यू मीन्स जब आप जाओगे तो आपको वो करना ही पड़ेगा, और उसके लिए लाइक मैंने जैसे नेट पे भी देखा, तो देयर इज अ कंपनी विच हेल्प्स यू टू बाय दैट कार, दे हैव ए क्वेश्चनेयर, बिकॉज एवरी एवरीवेयर यू हैव टू टेक डिसीजन, ओके मैं क्या लूं, राइट, मतलब मुझे ये फीचर चाहिए या नहीं चाहिए, तो मीन्स बट ये दिल मांगे मोर, एवरी टाइम you decide your budget is 10 lakhs, but it ends up at 15, 17 या 18 lakhs. So that और ये चीज हर एक जगह, मतलब decision making, it's a decision making, every step you have to decide, and it Yes. will help you in your family also, कल को आपका बेटा या बेटी बोलती है कि I need this thing, so we must bring them through this process, basically, that buying is not a problem, like, but they should learn. हम लोग आजकल क्या करते हैं, जैसे जिनके पास तो दे आर वेल ऑफ, they give their kids on their birthday, वो एक सरप्राइज दे देते हैं, बट दिस स्पेंडिंग, मैं उसके बारे में बोलना चाह रहा था कि हमें वो बच्चों को जब इनकलकेट करेंगे उनके उसमें, तो देन दे विल दैट विल बी ए रियल इम्पैक्ट, कि उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा कि कैसे आई हैव टू डिसाइड, कि अगर मुझे मैंने बजट डिसाइड किया, मुझे ये चीज मैंने उसके फीचर डिसाइड किए, एंड फाइनली दैट डिसीजन मींस क्या होता है, इवन मैं स्पिनी में गया ना, वहां पे उन्होंने बोला कि सर हमारे पास तो ऐसे लोग आते हैं जो 5 दिन में गाड़ी अपनी जो है सेल करने के लिए आ जाते हैं, यू नो बिकॉज Yes. उन्होंने उस वक्त वाइफ ने बोला ये कलर चाहिए मुझे, मैंने ले लिया यू नो ही मतलब आप जब आते हो, तो अगर आप ये एक बिजनेस गिमिक है कि व्हेन यू गो देयर, दे सेड ब्रिंग योर वाइफ आल्सो, किड्स आल्सो, मैंने ये ऑब्जर्व किया, एंड वहां पे आप मतलब यू कांट डिसाइड, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हो आप, एंड ड्यू टू दैट इन्फ्लुएंस यू बाय कार विच यू डोंट वांटेड, Yes. एंड ही सेड दैट मेरे पास तो सर 2 दिन के बाद कस्टमर आ गए और उन्होंने अपनी नई कार बेच दी वापस भेज दी। so Yes. so that is there, So yeah, much, so much of learnings, right? Through this one exactly, experience and that one right, decision that you made to just buy it. So it's all right, right. about the intention setting also. So when you just put out that intention, things fall in place. Yes. Exactly, Yes, exactly. Very true. Yes. absolutely. And after Very that, you don't regret your decision, or you feel proud, and that emotions, that is there, means that really helps you to yes. take Very any true. other decision also. Agree. So, Yes. thank you so much. So yeah. So Hareshji, we are out of time. So Yes, it's you, 9:34. Let's yeah, yeah, close. no problem. Yeah, और I मैंने can आपको also मैसेज share भेजा the है, story, but I'll share it, keep it for next time, maybe. एंड Next मानसी आई Sunday हैव or सेंट यू some other मैसेज, Sunday. सॉरी सॉरी, हाँ क्या बोले I'll आप? share those screenshots. I'll ओके, share those sheets with you. Yeah. हाँ, What message I मैंने मैसेज in भेजा the आपको कि आप अपने ग्रुप में भेजिए, जो भी बॉम्बे और पूना के बीच में है या महाराष्ट्र के बीच में है, दे कैन जॉइन दिस हाँ हाँ ग्रुप, हाँ विल समडे हैव ऑफलाइन आल्सो मीटिंग, विल अरेंज या समथिंग, या आप है श्योर राजू में, अपन कुछ बात करेंगे, सबको इंस्पायर करेंगे। आप भेज होप, दो ना आप भेज हाँ, दो कोई प्रॉब्लम मैंने नहीं भेजा आपको, आप भेजना मैसेज, ओके। ठीक थैंक यू है एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सो नाउ वी आई आर सेंड यू द लुकिंग रिकॉर्डिंग। फॉरवर्ड टू मोर अभी मित्र स्टोरीज है, कमिंग मित्र अभी आए हुए हैं, देखो नहीं मित्र, नहीं यू रेज द हैंड, he was there No, no, I was there only. I got a call, so I was on the call. I was there throughout. तो बड़ा he बिजी was आदमी है there यार। Thank you was it very much. helpful
Amazing, हाँ, amazing. I've been a fan of yours. The way you've been dedicated. 7 o'clock सुबह morning सब आ जाओ. 2:30 सब आ जाओ. Evening सब आ जाओ. Oh my God, amazing. I'm so inspired by your dedication. Really. Oh no, Thank you very you much. guys are inspiring us. In fact, I would say like extraordinary. You are like हम लोग truly. बोलते हैं And ना ड्रीम, मानसी जी का अलग है, शी से बिलीव इन क्रिएटिंग, नहीं आपने क्या लगा, डिजाइन, डिजाइन योर लाइफ, design your life. Correct. वर्क विद द Absolutely. डिजाइन योर लाइफ, ग्रेट, वेरी नाइस, And I गुड. would like to thank Harish ji also for creating this group and this idea of having everyone and sharing their stories. Really wonderful idea. So thank you, Harish ji, for this थैंक यू, also. थैंक यू, थैंक यू डियर. Thank you. Really appreciate. ये ग्रुप बड़ा And बने I would अपन. like to congratulate Manjeet ji also for his wonderful car. हमको एक दिन घुमाने लेके जाओ यार आपके ऑटोमेटिक कार Me में. or abhi now you know, right? There are so many stories we have in our life. It's not just one यस, Correct. story. No, no, true, We are very true, living by absolutely true. stories all the time. So we always have something to share. So we True, should true, be sharing absolutely in true. this platform. Yeah. In Okay. fact, every day there is ठीक a है, story. यस, Yeah. Very true. Yeah. एवरीबडी स्टोरी बिहाइंड देयर, एवरीबडी. Everyone has a And we are story. co-creating together, like with the Correct, universe, with God, with our people around us. So there is a beauty in correct. it. So yeah. Yes, absolutely. राजेश्वरी, Thank कैन यू से you. टू वर्ड्स बिफोर वी लीव? शी इज आल्सो ट्रांसफॉर्मेशन कोच, यू नो, शी इज आल्सो कोच. इतना आपने लिखा है, Yes, मैं thank पढ़ा you. हूँ. Thank you, Harish ji. So, yeah, the inspiration is you all, people only. I was a girl who was having the high dream in life, big dreams in my life. Wanted a platform to share. Got connected with the this field group. After that, NLP and beyond. Then Mansi B Club. I was in your group also, Hirani sir, when you have started this magic reading book. So I was अच्छा, not able to attend, yes, sir, but I used to listen the stories, some of the ओके, sharing of yours. But my timing as early morning, you people used to read, so I have to reach to school, but I was there. So yeah, thank you so much. थैंक यू डियर, थैंक यू. I loved, yeah, today's sharing of Manjeet and the meaning of a story that Mansi shared. I really loved it. I have written it also. And the idea of the tree, how to draw the tree and the branches and all. So that यस. can be a very inspiring. मेरे को मानसी जी ने एसओएस में जो किया था बहुत अच्छा लगा था. आई विल शेयर Ha, दैट, मेरे designing पास होगा. like, yeah, यस, वेरी नाइस. आज भी अच्छा किया आपने, आज yeah, भी अच्छा किया. दैट डे आई हर्ड यू फर्स्ट टाइम, मानसी, गिविंग अस Yeah. टोटल स्पीच, यू नो, इट वाज वेरी नाइस, आई लाइक्ड इट. और Thank एसओएस you. में बहुत दिन आया yes. बोलने को. आपने एक इम्पैक्ट जो किया था बहुत अच्छा किया था, वेरी And नाइस. one word she has shared in 2024, Mansi, that 2025 will be a dream year for us. We will be working our dreams. So that I have kept in my mind. Each and every day I'm Yes. working on my dreams. Yeah. This year, if you see that year, if the number is 9, and Yes, 9. 9 is a nine. universal Uh, number. So if you just research about yes, 9, so this is a very powerful year. So just make the most out of it. मैं आपको So yes, भेजता हूँ yes, नाइन का so क्या होता है. true. 9 इज वेरी पावरफुल. yeah, इट कैन बी 9 is डिवाइडेड, इट कैन like बी the मल्टीप्लाइड, हो गया universal ना सब. number. गैलेक्सी मगर का भी शेप वही होता है ना, like it's Hmm, like hmm. that हाँ, दैट्स इट. only. इफ यू गो टू द ऑल, आप जाओगे ग्रंथ में, 9 का बहुत बड़ा महत्व है, फ्रॉम गैलेक्सी And पॉइंट it's ऑफ the व्यू एंड highest अदर. number in a one digit number. So बस it राइट has नंबर. it has very it's considered to be a powerful number in the वे एंड, numerology. और ये हमारे जैन में और बाकी हिंदू में भी हम 9 को बहुत ये मानते, महत्व देते हैं. वेरी, क्या Yes. होता है इसको, अच्छा मानते हैं वो, क्या बोलते हैं वर्ड को, Auspicious. ऑस्पिशियस. नवग्रह हमारे काफी सारी चीजें उसके नवग्रह. अराउंड ही है ना, नव ऑल द हमारा जैन प्लैनेट्स लोग एंड का तो, एंड सो मेनी हमारा अदर जैन लोग थिंग्स. का जो मंत्र है ना, वो भी नौकार, मतलब 9 मंत्र है उसमें. यस, हाँ, नौकार बोलते हैं, नवग्रह. 9 मंत्र ही है. इन दैट यस. देयर इज नो नेम ऑफ गॉड. ये इसका एक और प्रभाव है ये नौकार का, कि देयर इज नो नेम ऑफ एनी गॉड. इट इज जस्ट हाँ. eulogising, you know, God, big acharya and all these people. It's a very good mantra, but there are 9 sentences, 9 stanzas. वाओ. Okay, so have a great time. थैंक Thank you, यू. Rajeshwari. Thank you, थैंक यू Mitesh. Thank you, एवरीवन. बाय बाय. Manjit. थैंक यू फॉर And lots of thank you to इनवाइटिंग मी. Mansi. Thanks, No, thanks. thank you for inviting me and giving this opportunity, Harish ji. नहीं, हम I'm आगे so बढ़ाएंगे इसको. grateful that you You be part of it. created this We'll wonderful. move ahead. Okay. Thank you, dear. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye.